Good morning to all of the students. Today we will start the new chapter, current, electricity and magnetisms. Okay. Current, electricity you know, you are hearing this word, and magnetism also, magnet, like this way. तो first can you recall which constant are present in an atoms? Atom के अंदर कौन सी चीज़ present होती है? We have seen that is electron, proton, neutron, like this way. An atom has the same number of positively charged proton and negatively charged neutron. एटम के अंदर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, एंड दे आर इन द इक्वल नंबर. दे आर इन द इक्वल नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दे आर टेलिंग वॉट एवर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मीन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो वॉट एवर द ऑब्जेक्ट डज नॉट शो एनी चार्ज इन इट्स एटम कंटेन charge particles. So if you will see any kind of the object, they will not show any kind of the charge. Because why? Because number of proton and neutron electron are equally. Therefore we can say plenty of electric charge is filled in the object around us. So in our surrounding we will observe there are in our surrounding you will observe there are number of the objects are there. In that objects there are plenty of the charge are also there. अपने सराउंडिंग में बहुत से इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या होता है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होते हैं. तो व्हाट विल हैपन इफ़ अ ग्लास रॉड इज रब ऑन अ सिल्क क्लोथ? क्या होगा? इफ़ यू विल ऑब्जर्व व्हेन यू विल टेक अ ग्लास रॉड एंड यू विल रब ऑन द सिल्क क्लोथ, हाउ द ऑब्जेक्ट गेट चार्ज, हाउ द ऑब्जेक्ट आर गेटिंग चार्ज. व्हाट आर स्टैटिक एंड मूविंग चार्ज? स्टैटिक एंड मूविंग चार्जेस. स्टैटिक एंड मूविंग चार्ज क्या होता है? तो दे आर टेलिंग द मूविंग चार्जेस गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द अदर, means from one object to the another object. They are telling whatever the charge is, they are transferring from one to the another object. These are negatively charged. They are telling this whatever the charges are transferring from one to the another one, that is negatively charged, and moving positively charged particles are the electron. The whatever the object are passing from one to the another one, means जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पास हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है, वो कहाँ जाता है, नेगेटिवली में जाता है. कैन दिस नेगेटिव चार्ज बी मेड टू फ्लो? नेगेटिव चार्ज फ्लो हो सकता है, जिस तरह से पॉजिटिवली चार्ज फ्लो होकर नेगेटिव में जा रहा है वैसे नेगेटिवली चार्ज फ्लो हो सकता है. कैन इलेक्ट्रिसिटी बी मेड टू फ्लो लाइक वाटर फ्रॉम हायर टू दी लोअर लेवल? इज इट पॉसिबल द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी मेक फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल? हाउ द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम इन द डैम, यू हैव सीन from higher to the lower level. You have learned that a force will have to be applied to a stationary object like into motion. Whatever the force we have to apply, whatever the stationary object are there, any kind of the object that is not in motion, but we have to apply the force. When you will apply the force, on that time the object will move in a motions. So that object, whatever the object is not moving, that we are telling as an stationary object, then we have to apply the force on that. When you are applying a force, the object will move. So current, electricity, when the electron in an electrical conductor are made to flow. How the current electricity has been made up? You will see when whatever the electrons in the electrical conductor like in a wire, you will observe. In the electrical conductor you will see the electron are flowing. Once the electron will flow, the current electricity will be developed and you will get the current easily. So now what is current electricity? A large current flow when lightning takes place from a cloud to the ground. You have seen presently in our rainy season time is there. Whenever you will observe rainy season times, the lightning happen and thunder happen, you know. On the cloud lightning happen, बोलते ना बिजली गिरती है, तो बिजली के अंदर क्या होता है कि बहुत सारा बोलता ना lightning होती है. तो इन दैट लाइटनिंग यू विल ऑब्जर्व द करंट, उसके अंदर सबसे ज़्यादा करंट होता है. तो वेल सेंसेशन इज फेल्ट और ड्यू टू माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल करंट फ्लोइंग टू दी ब्रेन वेन एवर यू आर टचिंग एनी काइंड ऑफ द थिंग्स. जब भी कोई बोलते ना तुम चीज़ वॉट एवर द हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट व्हेन यू आर टचिंग, तो डायरेक्टली योर ब्रेन गेटिंग अ सेंस वेदर द ऑब्जेक्ट आर हॉट और कोल्ड. तो एक माइक्रोस्कोपिक थिंग होती है, माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जेक्ट होता है, एक तरह का करंट पास होता है अपने ब्रेन में, जिससे पता चलता है तुम लोगों को कि ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट है कि कोल्ड है. यू आर अवेयर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर्स, यू नो वेरी वेल हाउ द फ्रॉम द वायर्स हाउ द करंट आर फ्लोइंग. इलेक्ट्रिकल बल्ब एंड इक्विपमेंट इन द हाउस, वंस द करंट आर पासिंग टू द बल्ब, यू ऑब्जर्व द बल्ब्स आर ग्लोइंग.
equipment, any kind of the equipment in the house, fan are there, light fans are there, TVs are there. Once the current is passing in the fan are moving from the positions. It is rotating in the motion. Equipment, in the case of the TV, you will observe fridge, you will observe. Once it is passing the current, once the current are passing in this equipment, you will observe that is also in the stationary, we can say in the moving, that will develop. That is in a motion, we can say moving, not in a moving position, but it will flowing, means it will start directly. Now in the electrical cells of a radio or in a car battery you will observe there are some batteries. In a car you have seen the battery are there. In a radio we are using a cell, have a ready cell or different kind of the cell, Nokia cell are there. A current is produced by the flowing from negatively to the positively charged electrons. In this way, once you are using the battery, तो whatever the negatively charged particles are moving to the positively charged particles. इसमें क्या होता है, जो करंट जब पास होता है बैटरी के थ्रू, स्मॉल रेडियो के बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिकल सेल है या बैटरी है, कार बैटरी है, तो इसमें करंट जब पास होता है तो जो नेगेटिवली चार्ज है ना, वो कहाँ जाता है, डायरेक्टली पॉजिटिवली चार्ज में डेवलप हो जाता है. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. Electrostatic potential, you will observe water or liquid flow from a higher level to lower level. Now whatever the liquids are flowing from higher level to lower level, this is thing in the dam you will observe. In the dam they are using this kind of the things to developing electricity. Or we can say simple an example, when more and more water has been filled, so during that time whatever the waters are flowing. Or some of the places in the mountain places, all in full of the day you will observe the waters are always flowing from mountain, we can say higher level to lower level. Heat always flow from a body at higher temperature to a lower temperature. Whatever the heat is there, how it is flowing from higher to the lower level. Once you are touching any kind of the things, simple an example, first you will feel like a hot thing, but after few seconds you will observe that heat sensation will be out and you are feeling like little bit in a normal temperature, that is in lower temperatures. So in the same manner they are telling heat flowing from always from a higher body temperature to the body temperature, lower temperature. जो heat flow होती है अपनी body में first एकदम higher temperature पे रहती है and then it is going in the lower temperature. Similarly there is a tendency of the positive charge to flow from a point of the higher electric level to the lower electric level. तो यही same manner इसमें क्या बता रहा है कि what was the positive charge, first it is flowing from the higher level, then it is changing into the lower level. This we are telling as an electrical level, deciding how the current will flow, in which direction the current will flow. कौन से डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो होने वाला है और कौन से लेवल में, मीन्स हायर लेवल टू लोअर लेवल, एंड व्हाट काइंड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर देयर. तो दिस काइंड ऑफ द थिंग वी आर टेलिंग एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या होता है, वॉट एवर द हायर लेवल करंट इट इज फ्लोइंग टू द लोअर लेवल करंट. द इलेक्ट्रिकल लेवल it is deciding, means from higher to lower level, that we are telling as an electrostatic potentials. Now potential difference. Similarly to the height of a waterfall, they are telling waterfall height, the temperature difference of the hot and cold bodies, जो hot और cold body का temperature, that the difference between the potential of the 2 point, a difference between of the potential of the 2 point means electrostatic potential, current, whatever it will be there. So in this difference of the potential means a volt we are telling. So there was the difference of the 2 point, means higher level to the lower level, that we are telling as a potential difference. The potential difference is an interesting to us. In day to day life we are using potential difference, that we are telling as a volt, 240 volt, 100 volt, like this way. Simple an example, just see a 4.1 A figure, electrical circuit. It is a wire, the wire is directly connected to the bulb, but there is no battery. Is it possible the bulb will go glow? पॉसिबल होगा कि डायरेक्ट वायर को मैंने बल्ब से कनेक्ट कर दिया, बल्ब से कनेक्टेड कर दिया तो बल्ब ग्लो होगा? तो यू विल ऑब्जर्व द बल्ब विल नॉट ग्लो. बट व्हेंस जस्ट सी द 4.1 वी कैन से B figure, electrical circuit. Now I connected the B. Now battery I connected. After connecting the battery I connected to the bulb. You will observe the bulb will glow. You will observe the bulb will glow. Why? Here the current is flowing from the higher level to lower level. This is here we are telling as a potential difference. So they are telling us a 4.1 copper wire they have taken, and they are preparing a circuit. No current is seen in the bulb.
and then they are connecting 1.5 volt battery. Just see the battery circuit symbol, just see negative and positive. This is the battery symbols. You will also there are a lot of the cell available in the market. 1.5 volt you have seen, 9 volt, 6 volt we can say cell also there, 9 volt cell also there. ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं. कुछ लोग बोलते हैं ना बहुत सारे 2-3 बैटरी कनेक्ट लेते हैं स्मॉल 1.5 वोल्ट के, कुछ लोग बड़े सेल लेते हैं 6 वोल्ट के, 9 वोल्ट के, डिपेंडिंग. Just take a dry cell, they are telling. Now it will be realized that the bulb will glow in these conditions. Here the electron are flowing from the higher level to the lower level. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ना, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे दो एंड में है ड्राई सेल के, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है. Here the potential difference are there. तो ये in this flow from negative terminal to the positive terminal. You will observe here the current will flow. यहाँ पे करंट कैसा फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव में फ्लो कर रहा है. दिस फ्लो विल ऑब्जर्व दैट टू एंड ऑफ द ड्राई सेल, जो बोलते हैं ना दो एंड ड्राई सेल के कनेक्ट कर दिया किसमें, कॉपर वायर को कनेक्ट किया बल्ब से, और वो बल्ब के जो दो वायर है किससे कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया. तो यहाँ पे क्या होता है, यू विल ऑब्जर्व दैट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल विल फ्लो टू दी पॉजिटिव टर्मिनल. जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का वो डायरेक्टली फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल सेल में. तो here the current you will observe in the opposite directions. Just see the sign negative and the positive. If same direction of the current will be there, it is not possible the bulb will glow. अगर दोनों की सेम साइन रहेगी, अगर 2 बैटरीज लेंगे और दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो करंट will not glow. We can say bulb will not glow. We will discuss this topic next time.